Okay. I'll just share the slide. Okay, everyone can see the presentation. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yesterday, with the division B, I have done with the I have begun with chapter 3. Okay, today I'll upload the video. Okay, you can check the video on YouTube. Okay, for division A, if there is any doubt regarding the concept of beginning when I started the unit 3. Okay, just go through the chapter. Okay, you can go to chapter again and again because it is a recorded video. And if there's any doubt, we can keep a doubt session as well. So I have completed the introduction part, then steps in strategic implementation, then steps in strategic making, modes of strategic making, steps of strategic choice, objective factor, subjective factor, BCG matrix model, then GE 9 force model, Michael Porter 5 force model, and McKinsey 7S framework model I have completed yesterday. So I'll upload the video by today afternoon, okay, by around 1 or 2 o'clock after our lecture, and you can go through the video as well. So all the lecture will be uploaded on the YouTube channel. It is better for students during the examination. They can refer the video again and again. So there is no need कि ओ मेरा कोई concept छूट गया वगैरह. So they can again see again and again videos. Uh, if any students have any doubt regarding any concept, they can mark that concept on a paper, and when we'll keep a doubt session, we will try to discuss that point. Okay. So today we'll start with strategic implementation. Okay, strategic implementation. We in the entire subject, when we have begin the subject, the subject begin with the how the organization should run, what kind of business, should we do. Okay, what will be our product, what will be our services, to whom should we target. Okay, then what will be the mission statement and the vision statement of an organization? Related to that, we need to formulate the strategies in chapter 2. Okay, we have seen the various features, characteristics of strategy formulation in chapter 3, in which we actually implement the entire strategies which is made by the organization. See, whenever strategies are made, strategies are always made on paper. When the strategies are beginned, okay, the strategies are made, these entire strategies are made on paper, but that needs to be implemented on a ground, that needs to be implemented on a field. Whenever the organizations practically, when the organization practically start working on the process, okay, that would be introducing a new product or services in the older market or the existing market, or starting a new or launching a new product into the new market, whatever the company policies are there. As per the company policy, they can always do. So strategy implementation on paper, that is a good part, but it is a very poor kind of thing if it is not implemented into the market. It is not useful if it is not implemented in market. So it is more important that the organization has to make the strategies on paper, as well as they has to implement the strategies on field as well. Then only it can be fulfill the goals and objectives of an organizations. So strategy implementation puts strategy into operations throughout the organizations with the help of the middle and operating level management. See, the entire process is run by top level executives or top management, but when the time of execution comes, okay, the execution part is always done or conducted by the middle level managers. This, the entire process, whatever product you would be having, that would be a laptop, a computer, a chocolate, a biscuit, a biscuit, okay, a watch, a pen, a book, okay, a purse, a mouse, whatever product the organizations are gonna making, the product will be actually manufactured by the lower level employees. You can say the blue collar workers. That is the responsibility of them. So whatever strategies are made,
strategy first of all needs to be understood by the lower level employees, because these are the people who will be actually implementing the strategy into process. Okay, then it involves leadership skills and the interpersonal relationship. The supervisors or the subordinators really need to have a leadership skills. They need to understand the interpersonal skills as well. They need to coordinate with the employees, okay, the blue collar workers or the middle level managers, okay, that would be the marketing managers, purchase managers, sales manager, HR manager, finance manager, or the operation manager. They need to have a proper coordination. They need to keep a proper interpersonal relationship. Successful implementation require the right organization design. The right organization design, or you can say a structure, the hierarchy of an organization always should be proper. आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपके पास अच्छा खासा स्ट्रक्चर होना जरूरी है. You might have really good strategy with you, but if you do not have the proper organization capacity, or you do not have the proper organization structure, the organization will fail to implement that really great strategies in the market. A good strategy without a proper implementation is like a poor strategy or a no strategy. Having a good strategy plan is the half battle won, and the other half will through effective strategy implementation. Whenever you have strategies on paper, whenever strategies are made on paper, you have already won the entire target. But it will get 100% when you actually implement into the market. Successful implementation is usually initiated by top management applying a teamwork or participatory style of leadership. These are the features of strategy implementation. First of all, comprehensive in nature. Comprehensive in nature is mean that you need to understand each and every activity of an organization. ऐसा नहीं कि आपने कोई डिपार्टमेंट छोड़ दिया या कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दिया या कोई पार्ट छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा. Comprehensive मतलब entire organizations. Whenever strategies are formed by top executives, it needs to be taken into consideration the entire company. It should be in comprehensive in nature. That the most important part. Whenever you want to get good amount of results, so it is more important that you need to understand कि each and every part of an organization plays a very crucial role. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं आता. इट विल बी ऑलवेज बी कनेक्टिंग टू द अदर डिपार्टमेंट एज वेल. देन रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उसका क्वालिटी, entire things depends upon one on the other. Then at the same time, the human resource. Without the human resource, it will the raw material will not get converted into the finished products. If you want to get the raw material converted into finished product, you require a skilled personnel or skilled employees in an organization. So whenever the organizations want to implement real good strategies, they need to cover each and every part of an organization. Second, commitment of a management. See, commitment of a management is very important, because these are the peoples who are really gonna make the strategies. Strategy making and getting support from top executive is two different parts. तो अगर स्ट्रैटेजी बना भी रहे, तो उनको उतना सपोर्ट भी करना जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द फाइनेंस का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, entire thing will be supplied by top executives of top management of an organization. So the middle level managers or the lower level employees or the operating level employees, they should be clearly communicated what are the things that needs to be done in an organization, what are the things to be conducted in organizations, what exactly the top executives required that needs to be understand by the middle level managers and the top level operating level employees. Then only these people can do the work in a proper way. जो भी उनका रिक्वायरमेंट होगा कि सर हमको मार्केटिंग कैंपेन के लिए इतना पैसा चाहिए, सेल्स के लिए इतना पैसा चाहिए, हमको एक छोटा सा कैनोपी ओपन करने का परमिशन दीजिए. ह्यूमन रिसोर्स माइट हैव issues
कि sir we really don't have real skilled employees, we need to do training and development facilities for the employees, or else we need to bring a fresh blood in a market. Okay, that is mandatory. So this all commitment is important. If you talk about like finance, the finance department would request top executive that we need to do good amount of investment in certain projects. So after 1 or 2 years, might be we'll get good amount of return on investment, or we should take out some money from market and we can utilize in our project. So these are the commitments you can always ask from the top executives. Third, you have series of actions. Yes, it is a series of actions. Strategy implementation is not basically a one framework. It cannot be done in one frame. It is a series of action from time of formulation to the implementation of an a strategies into the market, into the organizations. The managers are expected to take right decisions whenever the series of actions are done. A good amount of managers really should have a good amount of knowledge and attitude. With the help of their experience, they can utilize a good amount of improved technologies. Okay, this helps them to take to implement a long-term strategies with the which can give a good amount of results. So it is not just a one-time work. It is not just one framework कि हमने HR डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो सब जगह पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा. नो, इट विल नॉट. So it is a series of action. It's from strategy making on paper to actually implement the strategies in the market. It is a series of actions. Then you have versatile ability. What is versatile ability? Versatile ability is something like the managers at the middle level or the lower level sometimes has to mold themselves, or you can say have to change their attitude as per the situation in a market. जैसे मार्केट में सिचुएशन बदलती है उनको उनका एटीट्यूड बदलना पड़ता है. They sometimes needs to be aggressive, they needs to be sometimes defensive strategies, they need to understand the market, they needs to understand what is happening in a market. As per this available situation in a market, they need to mold themselves, they need to allocate the resources as per the situation. तो हम लोग कभी कभी होता है ना कि हमारा सिचुएशन के हिसाब से हम लोग प्लानिंग चेंज कर देते हैं. हर चीज अगर हम लोग के हिसाब से होने लगी, अगर सब चीज अगर हम लोग के हिसाब से होने लगी तो भगवान को कौन मानेगा. नहीं. तो इंसान के मन के हिसाब से कोई चीज होती है नहीं. तो यू नीड टू अडेप्ट योर स्किल्स, यू नीड टू हैव सम लीडरशिप स्किल्स दैट नीड्स टू बी चेंज as per the situations. So managers should do the non-routine work also. They already doing a routine work, लेकिन sometimes you need to adapt the non-routine work also. That is said to be the versatile ability. तो आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको कभी कभी अलग सा एक स्ट्रेटेजी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, उसको हम लोग बोलेंगे versatile ability. Then you have interrelated activities. As I said earlier, the strategy implementation cannot happen in vacuum. It cannot be done in isolation. कोई भी strategy implementation कहीं एक जगह पे नहीं होती. So it is more important for the organization that whenever strategies are implemented in the company, they need to understand that each and every functional department is interrelated with each other. So अगर मुझे मार्केटिंग का करना है तो मार्केटिंग कैंपेन सेल्स सब कुछ मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर मैं कर रहा हूँ तो रॉ मटेरियल आया कि नहीं, वर्किंग प्रोग्रेस है कि नहीं, मशीनरीज चल रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, मशीनरीज की कैपेसिटी है या नहीं, डस वी रियली हैज अ हाई टेक टेक्नोलॉजी विद द ऑर्गेनाइजेशन, फिनिश गुड्स का क्वालिटी कैसा है. इफ वी कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, we'll surely get a poor qualities of finished goods. And marketing department is depend on the production department, and the production department depends on the marketing department. All these departments depend on the finance department because ultimately पैसा वो लोग देने वाले हैं. So that is more important. So each department, the marketing department is doing good amount of campaigning, they are doing good amount of advertisement, marketing of the product in a market. But at the same time, if
the production department fails to give that commitment to the consumer, then it is a problem for the organizations. तो अगर हमने यहाँ पे कमिटमेंट किया है कंज्यूमर को कि आपको सारा प्रोडक्ट्स टाइम पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होगा. सो इट इज ऑल इंटर रिलेटेड एक्टिविटी हैपनिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेबल है. Then you have the functional activities. The functional activities also carried out similarly with the situational kind of leadership. Again, in this, you should also have various good ideas, values, beliefs, norms. Okay, the ethics, the most important ethics, what we do, what is right and what is wrong. You cannot afford to do any kind of cheating with the employees. You cannot afford to do any kind of cheating with the consumers or the customers. So it is more importantly that whenever there is a functional activities is carried out, these all things should be taken into consideration. Then organization structure. The organization structure also needs to be done in a proper way. If the organization wants to run smoothly, the hierarchy of a company should always have a proper flow. Then only the company can easily do the proper work. देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन. ऐसा नहीं कि एक ही साइड से कम्युनिकेशन होना चाहिए. किसी टॉप एग्जीक्यूटिव बोल रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन दूसरे साइड से फॉर एग्जांपल फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉयज टू द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, यहाँ पे अगर कुछ किसी भी तरह का कुछ अगर आपको रिवर्ट बैक नहीं हो रहा है तो वो नहीं चलेगा. द प्रॉपर कम्युनिकेशन शुड बी देयर. ओके, so functional activities also plays a very important role. These are the features of strategy implementation. Then again, there is a issues. Also, there are major issues in strategy implementation. First of all, institutionalization of strategies. The first most important, as I said, communication. Communication is plays a very important role. जब तक सारे एम्प्लॉयज को आपका स्ट्रेटेजी नहीं समझ में आएगा, मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड द लोअर लेवल मैनेजर, जब तक उनको स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएगा तब तक स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन का कोई वैल्यू नहीं होगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट वेन एवर ऑर्गेनाइजेशन formulate strategy and they are into a mode to implement strategy, the most important part is that strategy communication. You need to communicate the strategies to all the employees of an organization. वो चाहिए तो वो सुपरवाइजर हो जाए या कोई भी लेबर हो जाए ग्राउंड फ्लोर का या शॉप फ्लोर का, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है, कैसे प्लानिंग कर रही है, उनका पर्पस क्या है, उनका मोटो क्या है. इट इज ऑल नीड्स टू बी अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेटेड टू देम. सेकेंडली, इट नीड्स टू बी एक्सेप्टेड. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज डू रेसिस्ट विद स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, बट एम्प्लॉयज का अपना एक एटीट्यूड होता है, एम्प्लॉयज का अपना एक खुद का दिमाग होता है, एक्सपीरियंस होता है. सो समटाइम्स they do not cope up with the new changes what happens in a market. They do not really ready to accept the change happening into the market, so they try to resist such kind of change in a market. So what in such cases the CEO of an organization or a board of director of an organization always what they do, this they are the last person, they're the last person who take the decisions, and it has to be followed by each and every employee of an organization. Second, you need to formulate the derivative plans and programs. It is one of the most important thing that you need to formulate the plans and programs. Strategy तो आपने बना ली, अब action mode क्या है? You need to do the action part. You need to make plans. You need to make a program. What strategies we are making, how we gonna implement that strategy, how does we get a good amount of returns, when should do the implementation. जो भी हम लोग एक्शन प्लान होगा वो सिंगल यूज प्लान होगा या स्टैंडिंग प्लान होगा. सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है इट इज यूटिलाइज ओनली वंस. ओके, the budget will be different, the financial resources will be different, human resources will be different. Okay,
So this single use plan would be the only plan which can be utilized only for one purpose. Once that purpose is completed, the plan or strategy will be get over. But when you talk about a standing plan is a standard plan. Okay, it will be run throughout the organization on a regular basis. कभी कभी एक स्पेशल प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिलता है, और स्पेशल प्रोजेक्ट मिलने के बाद वो क्या करते हैं कि वो एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। वो स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाने के बाद उसको यूटिलाइज करती है, फॉर्मुलेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, एंड उसका पर्पस जब खत्म हो जाता है तो दे क्लोज दैट स्ट्रेटेजी। उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल यूज प्लान। Whenever there's a continuous production in an organization and strategies should be implemented, so such kind of implementation said to be the standing plan. Then translation of a general objective in a specific objectives. See, objectives, as I said, there are many objectives in an organization. ऐसा एक objective नहीं होता. There are almost 4, 5, 6, 7 objectives in a company. So all these objectives are very special. This all objectives is made by the organization. But इसको और थोड़ा specific कैसे किया जाए? For example, we need to increase our sales by 25%. ये हो गया आपका जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव को आपको स्पेसिफिक में कैसे कन्वर्ट करोगे? यू नीड टू डू गुड अमाउंट ऑफ कैंपिंग, गुड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग। ओके, उसको आपको सेल्स में करना है। You can offer a good amount of incentives or bonuses on sales of the product and services. So you can change the general objectives of an organization can convert specific objectives of a department. तो डिपार्टमेंट क्या करेगी? अगर आपने सेल्स कर दिया तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, बोनसेस मिलेगा, आपको फंड्स दिया जाएगा, आप कैंपेनिंग करो, कैनोपीज लगाओ, एडवर्टाइजिंग करो, ओके, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करो, तो दिस बिकम्स अ वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. So general objectives needs to be converted into very specific objective as well. Then you have resource mobilization and allocation. Resources मतलब होता है tangible resources, then you have intangible resources. Tangible में आता है आपका finance या capital, human resource, technological part, physical organization or infrastructure. Then in intangible you have a creativity, test, trust and confidence, reputation, then honesty, then organization capacity. So this is all the resources are available with the organization. Now, as per the strategies, whatever you have made, formulated, and which needs to be implemented, you need to mobilize it. You need to bring them into plan. उसको आपको यहाँ वहां से घुमाना पड़ेगा, यहाँ आपको mobilize करना पड़ेगा. You need good amount of money. You need good amount of facilities and equipments. You required a good amount of materials, you required supplies, services, and most important, you required human resource. तो आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से या कंपनी के स्ट्रेटेजी के हिसाब से you need to understand how much human resource we really required for this project or this work. How many funds, how many finance, how many capital you really want, how much tons of raw materials required to complete this work, and at what quality you want this entire work. So entire resources needs to be mobilized and it needs to be allocated. See, resource mobilization का मतलब होता है, as I said, there is a continuous production and there is an intermediate production. कुछ कुछ प्रोडक्शन कंपनी के अंदर होते हैं और कुछ कुछ प्रोडक्शन साइट्स पे होते हैं. फॉर एग्जांपल जब बैंड्रा वर्ली सीलिंग है, तो बैंड्रा वर्ली सीलिंग का जो जो कंक्रीट के जो स्लैब्स है, वो स्लैब्स वहां पे नहीं बनते, वो किसी और जगह पे बन के वहां पे आके शिफ्ट करते हैं. तो उसको हम लोग बोलेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन. जो जो बड़े एरोप्लेन्स के जो बड़े बड़े पार्ट्स बनते हैं वो एक जगह पे नहीं बनते, सब डिफरेंट जगह पे बन के एक जगह पे असेंबलिंग लाइन के लिए आ जाते हैं. सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए वैसा है, उस हिसाब से आपको आप पे सारे रिसोर्सेज अलोकेट करने होते हैं. आपको आपके ह्यूमन रिसोर्स भी उस हिसाब से डिवाइड करके, पैसे को डिवाइड करके, मटेरियल्स को डिवाइड करके आपको आपका सारा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना होता है. Then you have organization structure. Organization structure is more important said to be the organization hierarchy. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजी आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ नहीं जाएगा,
So there is a no meaning of making a very brilliant strategy which is formulated and which is implemented. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का उतना स्ट्रेंथ नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, organizations won't able to achieve the ultimate goals or objectives of an organization. So most importantly, if the company really needs to have good amount of output, that output can be get with the help of organization structure. That is more important. Then you have functional policies and administration. Functional policies is none other than the entire rules and regulation of an organization. The rules, regulations should be followed by each and every department, each and every employee of an organization. Okay, that would be finance, marketing, HR, production. It is a guideline. It is a guideline to do the work. ओके, जैसे आप लोग को एग्जामिनेशन होता है तो एग्जामिनेशन के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, दैट गाइडलाइंस नीड्स टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट और अ कॉलेज. सो सिमिलरली कंपनीज में भी अच्छे कैसे गाइडलाइंस बनाते हैं, दैट गाइडलाइंस नीड्स टू बी followed by each and every employee. Then only whatever strategies are made by the organizations, it can be successfully implemented in a market. So these are the major issues always a company has while implementing strategies. Then we have a next concept called project implementation. Project, what is project? कोई example आप बोल सकते हो project का? Any example of project? Project, what is project? See, whenever the organization, companies, for example, Larsen and Toubro, it's a bigger organization. Okay, they're into engineering. They really take good amount of projects of building bridges. Okay, highways, freeways, dams. Okay, सबसे बड़े बड़े जिनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज लेती हैं. So they have a definite start and definite end. ओके, जैसे जो कुरला में रहते हैं या जो हम लोग हमारे ऑफिस हमारे इंस्टीट्यूट के आगे पीछे रहते हैं, दिस पीपल कैन सी देयर इज अ ब्रिज गोइंग ऑन. आई गेस वो एक हाईवे है which will directly connect from SCLR to directly to the it will get end till Hyatt Hotel. हयात या वहां के ब्रिज पे कहीं पे तो वो खत्म हो जाएगा. So it is again a major project taken by MMRDA. Such kind of bigger projects are taken by the bigger organizations. So they have the n numbers of work. Even the L&T organization takes lots of projects across India. उनके अच्छे खासे क्रेन्स या ट्रक्स या जेसीबीज का काम चलता रहता है. They track n numbers of projects of dams, making bridges, okay, highways, freeways. उनका कहीं ना कहीं इंडिया में कुछ ना कुछ काम उनका चल. That's said to be the project implementation. So project is a well-defined work to be accomplished, is a business opportunity and attract investment. Such kind of a project really attracts a huge investment. और ये ऐसे सारे projects है ना, वो छोटे मोटे amounts में नहीं बनते हैं. वो 10,000 crores, 50,000 crores, 1 lakh crores, okay, ऐसे बड़े बड़े amounts में उनका सारा working and उनका estimates होता है. Then it really has a starting point and it really has an end point. Okay, a project is delayed, it will be prove uneconomical to the organization because all expenses will cross the budget. The most important part, when the project begins and when the project will end. For example, in 2021 January 2021 में हमने commitment किया कि हमारा project चालू होगा and by 2023 the project will get completed. So we have taken the time period of 24 months or 2 years. So if the project go beyond these 2 years or 24 months, the expenses will be huge. There will be lot of expenses that needs to be incurred by the organization. So the company should really have a good amount of target कि हमको हमारा प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर खत्म करके यहाँ पे सबमिट करना है. That is one more important thing. And you really required machineries, you required you skilled engineer peoples, you required human resource, you required laborers.
मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड फाइनेंस, आपको अच्छा खासा फाइनेंस यहाँ पे चाहिए, पैसा बहुत लगेगा आपको, इन्वेस्टमेंट आपको आपके पास अच्छी होनी चाहिए, तो अब जाके आपका सारा चीज जल्दी खत्म हो जाएगा। वेन एवर यू हैव सम सिविल वर्क, सिविल वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी फैक्टर, finance, or you can say capital. If the entrepreneur or if the person and organization does not have a required capital with them, the company will really struggle to complete that project. अगर उनके पास पैसा है वहां पे, तो वो आराम से उनका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द खत्म करके हैंड ओवर कर सकते हैं। So most important part that they need to be complete that entire project in time. There's a phases of project you can see. First, you have a conception phase. Conception phase is something like when the organization make the strategies. Okay, during the time of strategies, they have n numbers of projects with them. Okay, concept उनके पास होता है project का। तो जब भी strategy वो लोग बनाते हैं तो they just see how many projects are there with them and they select the best projects, okay, as per the strategic instant, whatever strength they have, okay, उनके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, इंजीनियर के लोग यहाँ पे हैं, दे उनके पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, दे हैव एन नंबर्स ऑफ गुड क्रेन्स, जेसीबीज, उनके मशीनरीज उनके पास अच्छे खासे हैं, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग है जहाँ पे दे कैन मैन्युफैक्चर द स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स एंड दे कैन ट्रांसपोर्ट टू द मेन पॉइंट, ओके, जहाँ पे उनको डिलीवरी करना है, तो उनको सोचना है कि हमारा कॉन्सेप्ट कैसा है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट कम्स अंडर द कंसेप्शन स्टेज। Second, definition phase. Definition phase is that you almost have 3 to 4 different kinds of projects with you. On that 3 to 4 projects, you need to give a priority. First priority to this project, second priority to this project, third to this project. You need to evaluate आपके organizations के financial, HR, technical, infrastructure, suitability के हिसाब से you need to give the priorities. आप आपके पास आपके दिन भर के काम में भी यू गिव ना प्रायोरिटीज टू ऑल योर वर्क, तो आपके जो दिन भर काम होगा वो दिन भर के काम के हिसाब से यू नीड टू गिव सम प्रायोरिटीज कि विच वर्क शुड बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज जो जो ऑर्गेनाइजेशन के पास कंस्ट्रेंट रहेंगे, फॉर एग्जांपल पैसा उनके पास उतना नहीं, फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5,000 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है एंड 2,000 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है, but if you give the priority of 2,000 crores ka project, you can easily complete that project and you can get good amount of money, and with that money you can start with 5,000 crores ka project, and with that 5,000 crores ka project, once it is get completed, you can go for the 10,000 crores project. So you can give the priorities, so the projects will also get completed and you can always do the work. Then planning and organizing phase, most important, you need to do good amount of procedures and the legal formalities. Planning is so important. अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अच्छा खासा प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। Okay, so planning and organizing phase is so important. You need to organize the entire plan. You need to do proper planning कि आपके पास अच्छा खासा प्रोजेक्ट टीम है क्या नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है कि नहीं, ह्यूमन स्किल्स एज पर थिंग्स है कि नहीं, प्रोडक्शन scheduled. You should always have the production scheduled with you. प्रोडक्शन स्केड्यूल अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा काम कब चालू होना चाहिए। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वी वाज हैविंग 10 to 15 पीपल टू डू जस्ट प्लानिंग। हमारे कम से कम कुछ 12 से 13 प्रोडक्ट्स थे, एंड विद दैट 12-13 प्रोडक्ट्स वी ऑलमोस्ट हैव 15 पीपल्स, द टीम ऑफ 2 पीपल्स हु आर हैंडलिंग जस्ट प्लानिंग पार्ट कि कौन सा प्रोडक्ट कब चालू होगा, बिकॉज वी ऑलमोस्ट हैव क्लाइंट हमारे सिंगापुर, यूएस के और जापान के क्लाइंट्स पकड़ के वी ऑलमोस्ट हैव 20 or 21 क्लाइंट्स। तो हर एक क्लाइंट्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता था, अलग अलग क्वांटिटी होता था, अलग अलग ड्यू डेट्स होते थे उनके। तो द प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज टू वर्क इन अ प्रॉपर फेज
and they need to understand कि which client needs which products on which time. तो उसके हिसाब से प्लानिंग करके मशीनरीज पे सेटिंग लगाना होता है. मशीनरीज पे सेटिंग लगाने के बाद यू विल गेट द आउटपुट. यू नीड टू कीप एटलीस्ट अ मंथ एज अ बैकअप प्लान बिफोर द डिलीवरी. फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रांसिट में प्रॉब्लम हो गया, शिप डिले होती है, या अगर फ्लाइट से जा रहा है, कार्गो से जा रहा है, तो कार्गो में डिले ड्यू टू क्लाइमेटिकल कंडीशन, साइक्लोन, सुनामी. So you cannot tell these excuses to your client, because these are the people who gonna give you money. These are the people who give you huge amount. So you need to keep a buffering time with you. So planning and organizing plays a very crucial role. Implementation. So whatever strategies, the major portion of the work before exam, before the project is, that is your implementation, the strategy implementation phase. Okay, for example land acquire किया, construction चालू किया, वहाँ पे जो जो मशीनरीज आपको चाहिए वो मशीनरीज आपने परचेस किया, इक्विपमेंट परचेस किया, raw materials and whatever tools are required by the organization that you have purchased. Okay, actual conduction of the production on trial basis, you do good amount of R&D part. On the R&D part you do entire stuff, और वो ट्रायल बेसिस पे करने के बाद में whenever you find out कि हाँ this is now doing properly, then you can do on the full fledged part. So implementation phase is also there. Then you have functional phase. The functional phase is something like it is handed over to the responsible person. For example, the Maharashtra government has given the project of SCLR, or you can say Bandra Valley Ceiling, to L&T. So L&T has a responsibility to complete a project in 3 years, and once the project is get completed, the entire project with all the details needs to be hand over to the concerned party. So concerned party will start operating it. तो हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको ये प्रोजेक्ट का काम दिया ना, वो प्रोजेक्ट का काम देने के बाद हमने इसको टाइम पीरियड में खत्म किया. Government has paid the amount, paid the money to the private organizations, और वहां से हमने वो सारा आपको वहां पे सबमिट करके आपको फंक्शनल लेवल पे ऑपरेट करने के लिए हैंड ओवर कर दिया. So these are the phases of a project. First you have a conceptual phase, definition phase, the planning and organizing, implementation phase, and a function phase. Then you have stages of a process implementation. You need to do have a process. First you have an exploration process. In exploration process you need to identify, should we go with this process, or should we go with the project or no. ये स्टेज पे आप इसको स्टडी करोगे, आप इसको एक्सप्लोर करोगे. You will find out what new things or innovative things you can find out in this project, and shall we go with this project or not. उसको हम लोग बोलेंगे exploration stage. In this, the organization will decide whether we should go ahead with this, with the implementation project or not. They will decide at this level. Second, at you have an installation part. Installation, it will be that you need to prepare the strategy implementation on paper. यहाँ पे आपका सारा strategy on paper होगा. There will be actual implementation will be on paper. How the strategy will be made, when strategy will be implemented to the we can implement into the organization. Okay, in which phases, in which time period we will implement the strategies into the organization. Okay, the entire installation part, okay, will be on a paper. Then third, you have initial implement. This is a initial implementation, or you can say a trial basis. Okay, you take data review, you make decisions, you take feedbacks. Okay, so you do good amount of initial implementations of a process. जो भी आपका project होगा, वो project को आप initial implementations पे R&D करके सोचोगे कि वो कैसे उसको आप R&D करके कर सकते हो. Then once it is successful and you understand whatever challenges you are facing, then you can go for full implementation. Once the initial implementation is done, आपको लग रहा है कि नहीं, more or less अच्छा quality का output हमको मिल रहा है, तो we can easily go up with the full implementation part.
Then you have scale up. Scale up is something like expanding your infrastructure. You can make a good amount of improvement in data systems. You can hire, you can do employment of skilled personas. Okay, you should have an appropriate of policies, and you should have shared website, installing learning communities, holding regular meetings, and so on. So once you do a full implementation of your project, okay, in an organization, you can always do scale up. You can increase, you can expand your business. You can hire skilled employees in an organization. You can filterize, you can do good amount of policy making in organization. You can share the website links as well, install learning communities. अगर आपको लग रहा है कि आप रेगुलर होल्डिंग मीटिंग होल्ड कर सकते हो तब वो भी यहाँ पे कर सकते हो. अंडरस्टूड. ओके. जस्ट अ मोमेंट है, 2 मिनट. थोड़ा सा मैं आपको रोका हूँ यहाँ पे. आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग फॉर 2 minutes. Okay. So
Understood this part? Stages of process implementation. हेलो, सब सो गए? Yes, sir. कोई है जो बैठा है, जो सुन रहा है? सब सो गए? Yes, sir. Okay. So there's a type of processes also there. First, you have value chain analysis. Value chain analysis is a chain activity, okay, which happens in every organization, okay. That can be said, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम भी डाला हुआ है. Inbound logistics. Inbound logistics का मतलब होता है incoming of a raw material. प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन का मतलब होता है वर्किंग प्रोग्रेस. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है फिनिश गुड्स. Then you have marketing and sales, then again you have a services. Okay, so this is all about the incoming of a raw material, then you have a working progress, then in outbound it is a finished products, marketing and sales and services. Now value chain analysis is divided into two parts, that is the primary activity and you have a supporting activity. See, primary activity जो भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो काम होता है, it can happen with the help of supporting active, that is the research and development, strategies, technology and human resource. If you do not have good amount of supporting activity, for example human resource, technology, strategy or research and development, the organization cannot complete their production activity, or you can say the primary activity of a company. The most important, whenever you have the maximum output of a company, okay, the materials from raw materials to finished products, they have the major, what you say, the major part of an organization is that you should get the maximum value with the least cost. Maximum production with the least cost को हम लोग बोलेंगे value chain analysis. So it is more important for an organization कि अच्छा खासा उनको support मिलना चाहिए. They should have both the parts working simultaneously. That is more important concept. जो आपका ये, अगर आपने लो कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट का काम किया तो आपका उतना ही मार्जिन बढ़ेगा, विच इज ऑन राइट साइड, विच शोज इन द एरो पार्ट. So you have a maximum margin. Second, you have benchmarking. Benchmarking is, you can see, a standard. A standard of good quality products is manufactured and it is delivered to your customers or a consumers. उसको हम लोग बोलेंगे benchmark. So we have a certain benchmark. We have a certain level of standards. Just a moment. Hello. Dali start exam. हाँ हाँ हाँ. ओके, कूल कूल, चालेल चालेल, ठीक आहे, चल, थँक्स. ओके. So benchmarking is, for example, is more important part. For a student, the benchmarking would be I'll score 90%, 95% in coming semester. Okay, that would be a benchmark. So every semester from first year to third year, I'll keep that benchmark कि मुझे हर semester में 80% के above या 85% के above मुझे marks आने ही चाहिए. There are many organizations who has a really good benchmark. They'll follow the benchmark. They'll compare the products with the other organizations कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा है, कितना satisfaction देता है कस्टमर्स को. That is important. So you need to compare this benchmarking and you need to take this part. Okay. Third, you have business process re-engineering. The word itself says re-engineering. Whenever the things are not going as per the organization, the things are not working as per the organizations, they need to put lots of money, they need to put lots of efforts, despite they are not getting good amount of returns in process. तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे कंपनी का कुछ ना कुछ कहीं पे फॉल्ट है, उनको लग रहा है कि हम कहीं पे गलती कर रहे हैं. We are doing a wrong process, we are not following the right process. In such things, whenever the cost is high and profit is low, the organization needs to do
re-engineering part. They need to work on their structure. They need to work on कि हमारा कहाँ पे गलती हो रहा है, और when we where we should work on, where we should do our process right. So the cost of part, the cost of entire thing will be changed. So there will be less amount of cost incurred and there will be high profit. Okay. Fourth, you have enterprise resource planning. Enterprise resource planning is none other than it is a software. Okay, ERP is a software which gives you the entire detail, whatever information you feed in. For example, HR, marketing, finance, operations. पहले हमारा अकाउंट्स का सारा चीज बुक्स में होता था, बुक कीपिंग्स में होता था. नाउ देयर इज नो नीड ऑफ बुक्स कीपिंग एंड नथिंग. यू हैव अ कंप्यूटर, यू हैव अ मोबाइल फोन, यू हैव अ सॉफ्टवेयर विथ यू. जैसे अभी एक सॉफ्टवेयर है, what if SAP. SAP is a latest software run by many organizations which includes many features. इट इज सो कॉस्टली सॉफ्टवेयर. अगर उसका आप एग्जाम देने भी जाओ तो उसका एग्जाम का कॉस्ट भी बहुत महंगा है. तो ऑलमोस्ट यू हैव 4 to 5 पेपर्स एंड यू नीड टू अटेम्प्ट 4 to 5 पेपर्स ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस. तो हर एक पेपर का कॉस्ट बहुत महंगा है. But if you really crack that examination, you will get really good opportunities from private organizations. Similarly, अभी still 40 to 45% I guess ERP आज भी लोग utilize करते हैं because it is user friendly and many people are now well versed about the entire process. So that is more important part. So ERP is a kind of software which helps you to conduct the work very speedily, okay, very efficiently and effectively, so you can complete the process. Then you have a supply chain management. Supply chain management, आप लोग का example ले सकते हो FedEx, या you can take the example of DHL. Okay, जो raw material, you can see this part, the diagram. You can have a raw material, then you have a supplier, manufacturing of that product, transportation, you can see a distribution, then it will go to the customer, and then it will go to the ultimate consumer. So even in the photograph, in that picture, it shows the customer are different and the consumers are different. There's always a difference between a consumer and a customer. The customers are those people who purchase that product, but the consumers are those people who really consume that product. अगर मेरे भाई ने जाके वो मैगी का पैकेट उठा के लाया या थम्सअप का पैकेट उठा के लाया, तो ही विल बी द कस्टमर. बट अगर थम्सअप मैंने पिया या मैगी मैंने खाया, तो आई विल बी द अल्टीमेट कंज्यूमर. So supply chain is also a very important concept because वहाँ पे movements of goods and services आएगा, storage of goods and services भी आएगा, working progress, inventory, finished goods, सारा चीज logistics में यहाँ पे आता है. If you really want to make a career ना, you can always go for logistics. Logistics में इतने सारे opportunities है, you will really enjoy the portfolio. और अगर आपको शिपिंग वगैरह में, लॉजिस्टिक्स में अगर आपको जॉब मिलता है, तो यू रियली कैन एंजॉय दिस पार्ट. देन यू हैव लास्ट कॉल आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग मतलब गिविंग द वर्क टू थर्ड पार्टी. ओके, organizations really don't have time to complete that work. So what I'll do, I'll give the certain part to third party. I'll give the things to third party. I'll understand कि बाबा मुझे देखना है कि थर्ड पार्टी वो काम कर पाती है कि नहीं कर पाती है, उनकी कैपेसिटी है या नहीं है. So I'll give the work to third party. For example, L&T organization है, for example, and we really has a lot of work to do. So I don't for HR department in my organization. So what I'll do, I'll give the entire HR process to the third party. So third party will do the entire process. मतलब उनका सैलरी निकालना, उनका स्टाफिंग का देखना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो भी काम होगा वो सारा चीज वो थर्ड पार्टी देखेगी. तो उनका सिर्फ हमको उनको अटेंडेंस देना पड़ेगा हर महीने का, और बाकी सारा चीज वो थर्ड पार्टी करेगी. ऑब्वियसली दे विल चार्ज यू डिसेंट अमाउंट, लेकिन वो सारा चीज थर्ड पार्टी करेगी. उसको मतलब बोलेंगे आउटसोर्सिंग. अंडरस्टूड. टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. आपके पेपर, अगर आपको थ्योरी पेपर आएगा तो इट विल बी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये आपके पेपर में
आएगा। देन दिस इज दिस स्ट्रक्चर, हमने बिगिनिंग से स्ट्रक्चर 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 देखा है। नाउ वी हैव एक्चुअल स्ट्रक्चर, structural implementation, types of different structure, entrepreneurial structure, functional structure, divisional structure, and you have SBO, strategic business unit, matrix structure, and you have a network structure. Entrepreneurial structure का मतलब होता है कि यू कैन टेक अ सिंपल एग्जांपल। जो नीचे आपकी बिल्डिंग के नीचे जो भी बनिया का दुकान है या रेशन का दुकान है, वहां पे एक ओनर होता है और एक वर्कर होता है। Okay, the owners give the instruction to the employee, and employee fulfill the requirement of the customer. A very simple mode. You can see the first diagram, the entrepreneur and the employee is the uh, एग्जाम्पल ऑफ दी ऑन्टरप्रनर एंड दी एम्प्लॉयज। यहाँ पे किसी भी तरह का झिकझिक बिकझिक नहीं होता है, सिर्फ एक ओनर होता है एंड देन यू हैव एन एम्प्लॉय। ओके, द एम्प्लॉय फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड द चैप्टर इज क्लोज। तो यहाँ पे आपको दो ही लेवल्स होते हैं, एक ऑन्टरप्रनर का एंड देन यू हैव एन एम्प्लॉयज। सेकेंड, यू हैव अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। हमने आज तक या अभी तक फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के बारे में बहुत पढ़ा है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है कि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, marketing department, then you have an R&D department, you have a sales department. So you have a headquarter, that is your top manager, and beyond, yeah, you can say below the top manager, you have the four various departments working with you. That will be the operational department, the marketing department, the R&D department, and you have a sales department. देन यू हैव डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजन का मतलब होता है कि यू हैव अ डिविजन ए, बी, सी। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ डिविजन एक्स वाई जेड। तो यू हैव अ मेन सीईओ ऑन टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव थ्री डिविजन्स विथ यू। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिविजन एक्स में कोई एक प्रोडक्ट चल रहा है, डिविजन वाई में प्रोडक्ट चल रहा है एंड डिविजन जेड में कोई प्रोडक्ट चल रहा है। तो हर एक डिविजन का अलग अलग R&D, मार्केटिंग एंड फाइनेंस स्ट्रक्चर है। तो डिवीजन ए शायद से अंधेरी में होगा या कुरला में होगा, तो डिवीजन बी माइट बी कल्याण में होगा, डिवीजन सी माइट बी इन पुणे, और इट विल बी अलीबाग कहीं और पे होगा। तो डिपेंड्स कि डिवीजन उनका कहाँ कहाँ पे होता है। तो हर एक डिवीजन अलग अलग जगह पे होता है। ओके, दैट्स कॉल्ड डिविजन स्ट्रक्चर। Then you have SBU, Strategic Business Unit. Strategic Business Unit का मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन की बात करो या होल्डिंग कंपनी की बात करो, तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टाटा ग्रुप। सो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज योर टाटा ग्रुप एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट 1, 2 एंड 3। तो यूनिट 1 आप बोल सकते हो कि टाटा स्काई है, यूनिट 2 आप बोल सकते हो कि टाटा ऑटोमोबाइल्स है, एंड यूनिट 3 आप उसको बोल सकते हो टाटा स्टील है। So each business, yeah, each sector will have their own ways of working. Strategic business unit of one, that would Tata T, तो उनका टाटा टी का R&D डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ये टोटली डिफरेंट होगा। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट दैट इज टाटा ऑटोमोबाइल से अलग होगा। ऑटोमोबाइल्स का R&D अलग होगा, टाटा स्टील का R&D अलग होगा एंड टाटा टी का R&D अलग होगा। टाटा स्टील का लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल्स का लॉजिस्टिक्स एंड टाटा टी का लॉजिस्टिक्स सब कुछ अलग अलग होगा। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट 1 कैन बी सेड एज अ सेपरेट बिजनेस, एंड ईच बिजनेस एक दूसरे के बीच में हम लोग यहाँ पे इंटरफियर नहीं करेंगे। विल नॉट इंटरफियर इन दिस, एक दूसरे के प्रोजेक्ट में। हम लोग, हमारा काम है कि हम लोग यहाँ पे अपना काम खत्म करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इट इज मोर इम्पोर्टेंटली दैट वी कैन इजीली कंप्लीट दिस वर्क। जस्ट अ मोमेंट, क्या हो गया इसको यार। सुबह से तकलीफ दे रहा है मेरे को ये।
Then you have next, that is matrix structure. Matrix structure has two part, that you can say chief executive to chief executive, then you have a managers, okay, marketing manager, and you have finance manager. साथ साथ में marketing manager साथ में you have a project manager as well. So whatever projects are going on, so the projects will have a proper coordination with the marketing manager or the finance managers or the R&D managers. So these two people needs to be working together. वो एक साथ उनको काम करना पड़ता है, वो अलग अलग काम नहीं कर सकते. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैन बी इजीली सीन इन व्हाट यू से टाटा ग्रुप में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, एंड इन दैट एंटायर प्रोजेक्ट यू कैन ऑलवेज सी एन नंबर्स ऑफ थिंग हैपनिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन. सो मैट्रिक प्रोजेक्ट में आप प्रोजेक्ट प्लस यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है. दी एम्प्लॉयज आर गेटिंग कंफ्यूज कि हम किसकी बात सुने, डस वी फॉलो द प्रोजेक्ट मैनेजर और डस वी फॉलो द मार्केटिंग मैनेजर, टू हुम वी शुड फॉलो. दैट्स वाई जैसे यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, वर्क प्रेशर्स वगैरह होते हैं, might be sometimes communication gaps बहुत सारे होते हैं. So there are very advantage and disadvantage you can always see. Okay, then last you have network structure is one of the best structure I think which is there. And nowadays due to this COVID pandemic you can always see good amount of corporate network structure में क्या होता है कि you have to just do a good amount of relationship with all the people. So you have को एक जगह से में जगह बैठना है, that would be your home also. तो आपका होम आपका हेडक्वार्टर बन सकता है. And once you have a good contact with raw material or suppliers, you need to contact them. You need to contact and you have to give an order कि मुझे इतना raw materials का जरूरत है. Then you can contact two suppliers. Supplier raw material का supply करेगा to the manufacturer. Manufacturer will make sure that it will get complete in time process. Then after the finished goods, it will go to the distributor, or you can say the logistics person. From logistics, you can contact the person who can keep the inventory, or it can be stored in a warehouse. So it will be there for a good period of time. एक महीना या 1.5 महीना जो जो आपको चाहिए वहां पे रख सकते हैं उसको. एंड उसके बाद में you can supply as per the requirement or as per the order. It can will directly go to the customers or consumers. तो यहाँ पे आपको ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं कहीं पे. यू जस्ट रिक्वायर्ड अ नेटवर्क, यू जस्ट रिक्वायर्ड अ मोबाइल नंबर. या आपका जो भी नेटवर्क होगा वही आपको चाहिए. आपको जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस ही चाहिए. आपको सिर्फ आपका नेटवर्क बनाना है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर, and you need to supply the goods and services to them. That is said to be your network structure. Understood? Any doubt in this? Hello? Yes, sir. Understood. दिख रहा है कि आपको मेरा स्क्रीन का थोड़ा इशू हो गया है. My Yes, laptop is yes, getting sir. hang. Your taskbar is gone up, sir. Yeah, I Yes, don't sir. know what is Minimize it happening. down. सुबह से बहुत तकलीफ दे रहा है मेरे को ये. That's why the 10:30 lecture was got started by 11:05. सुबह से बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो गया लैपटॉप को. सर एज पे रखो, उस पे कहाँ पे रखूँ? एज पे, वो जो टास्क बार के ऊपर जो एज है ना, हाँ. हाँ तो उधर एक ऐसा हाँ अभी उसको पुल डाउन करो. यप. ओके, अरे पहले बोलना चाहिए था ना. सॉरी सॉरी सर. ओके ओके ओके, दिस इज व्हाट इज गेटिंग हैंग्ड. बार बार हैंग्ड हो रहा है यार, पता नहीं क्यों. नो इशू. चलो आप लोग को समझ में आया ना, तो आई विल नॉट गो फर्दर बिकॉज ये सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे यार. Okay, sir. So tomorrow again we'll start and tomorrow we can finish this chapter. Okay, थोड़ा ही 5 या 6 स्लाइड ही बचा है, तो tomorrow we can complete unit 3. Okay, meantime I'll upload whatever videos needs to be uploaded on YouTube. तो YouTube पे जाके आप चेक करके उसको देख के कर सकते हो. ओके, माय वॉइस इज क्लियर ना, मुझे प्रॉपर Yes, वॉइस sir. वगैरह आ रहा है ना, समझ में वगैरह हाँ, आ रहा है ना, हाँ. कोई प्रॉब्लम नहीं यस समझने में ना. नहीं, नो नहीं, सर. नहीं. ओके, थैंक यू. सो Thank शैल you, वी sir. स्टॉप हियर नाउ? Yes, sir. If you want to. ओके, so I'll just complete the meeting. I'll just finish the meeting. Okay.
Sir, I think your PC is lagging because you have too many Chrome tabs open, sir. हाँ पर क्या है वो एग्जाम भी चल रहा है ना साइड बाय साइड, उसके वजह से शायद से हैंग हो हाँ रहा है, सर तो वो, पता और नहीं। उसके ऊपर सर आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो ना सर, तो बहुत हाँ, रैम लेट है सर, रिकॉर्डिंग इसके तो लिए लैग होता है। करना जरूरी है बिकॉज आप लोग को आगे प्रेफरेंस के हाँ लिए वो तो है, चाहिए वो तो ना। है। वही हैंग हो रहा है हमारा पीसी बार बार। So we can leave the meeting or यस यस यस, यू okay ऑल sir. लीव द मीटिंग, यस Okay नो sir. प्रॉब्लम। Thank you. अगर आप लोग लिविंग मीटिंग लीव करोगे थोड़ा सा उसका प्रेशर भी कम हो हाँ जाएगा। हाँ ठीक है सर। ओके, Okay, bye. थैंक यू सर। या थैंक यू वेरी Thank you मच, sir. बाय Bye. बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय। Thank you sir. Bye.